Thank you so much, Ritvik, for connecting with us on OTTplay. Thank you. It's a pleasure. So the trailer of your upcoming series, Campus Dairies, looks really promising and it has been receiving great response. It takes us through from that, befikre wale din to complications wale din, Right. and which is usually part of every campus story, different from the other campus drama. Because it has इसमें सारी चीजें हैं, there is, जैसे आप college shows देखते हो, heartbreaks, you see, mostly it's about romantic relationships and friendships, and that is all there is to it. But with Campus Diaries, it has all of this, but so much more. With Campus Diaries, I think एक teenager के life में आप college से निकलते हो तो there are so many things यार, आपको पता नहीं होता life में आगे क्या करना है. कुछ लोगों के घर से प्रेशर होता है कि यार ये करो, कुछ लोग लाइफ फिगर आउट कर रहे होते हैं, कुछ लोग की बुरी आदतें लग जाती हैं, कुछ लोग उससे डील कर रहे होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर होता है. तो मतलब एक टीनेजर के उस फेज में दिमाग में इतनी सारी चीजें, लाइफ में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं. सो आई थिंक कैंपस डायरीज डील्स विद दैट एज वेल, एंड इट मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से एज अ स्टोरी ये सारी चीजें बताई गई हैं थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो आई थिंक दैट इज व्हाट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर कॉलेज शोज. एंड मतलब मैंने भी जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मतलब मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन में ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स है जो मैंने पढ़ी है मेरे करियर में अभी तक. तो मैंने जैसी स्क्रिप्ट पढ़ी है उस गेम, मैंने जो डायरेक्टर है प्रेम, उनको बोला है मुझे आप कोई भी रोल दे दो मैं कर लूंगा, मैं पीछे पासिंग कर लूंगा बैकग्राउंड में, बट आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द शो because when I read it was so much fun and it tackled everything so nicely. So yeah, I think that's what sets it apart. So you play the role of Abhilash, who is this innocent guy in college, but all excited to try out new things. And there's the scene in the trailer also where he barges into the room of Sudhir Bhaiya and says कि मुझे आज sex करना है. So could you tell us a bit more about your character? So अभिलाष यार हाँ है, वो innocent तो नहीं कहूँगा, but हाँ थोड़ा सीधा साधा लड़का है. And yes, he wants to try new things. He's always there for his friends. He's a मतलब वो क्या कहते हैं जिगरी दोस्त है, वो है मतलब अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाए. और सुधीर जो है उसका रूममेट ही है, तो वो पूरा टाइम साथ ही रहते हैं. तो ये दोनों भाई हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है. तो वो जो ट्रेलर में जो पार्ट आपने देखा वो एक्चुअली स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है. तो वो एक काफी फनी सिचुएशन है, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा. बट या वो एक है, एंड उसमें उनके साथ आगे क्या होता है वो देखने में बहुत मजा आएगा. So yeah, that is Abhilash. He's always there for his friends. He's the buddy of the group. So what are your fond memories of college? My fond memories, तो मैं honestly बोलूँ तो since I'm in this profession, तो most of the times मैं shoot पे होता था या काम कर रहा होता था, तो मैं college इतना regularly attend नहीं कर पाया. बट जब भी किया है मतलब ज्यादातर तो मैं बंक ही करता था, मेरे दोस्तों के साथ पढ़ाई थोड़ी बहुत ही करता था. So we used to go out, we all have our bikes. So हम बाइक पे निकल जाते थे राइड पे, कुछ कभी कीमा पाव खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं चिल कर लिया बैठ के. So that used to be that. I've made really good friends मेरे कॉलेज में, and in fact मैं हाल ही में उनसे मिला था, and I'm planning to watch the show with them as well. But I think while shooting for this show मुझे लगता है कि पूरे कास्ट में हमने शायद कॉलेज लाइफ में जो भी मिस किया होगा हमने शो के थ्रू जी लिया है. एंड it's got that nice nostalgic factor to it also, कि जिनको अपनी कॉलेज लाइफ याद आती है वो ये शो देख के याद करेंगे. जिनका because of COVID college life miss हुआ है, they'll also enjoy watching this show because maybe they lived their college life through this show. Okay, so you were as a student, I mean, like quite disinterested in studies. Like you also play the role in Lakhon Mein Ek, and now here as well in Campus Dairies. So Lakhon Mein Ek में तो वो science करा था. That was never my cup of tea. Science मुझसे नहीं हो पाता था. But I was not disinterested. I was a decent student. I enjoyed studies also. But हाँ मतलब दोस्तों के साथ टाइम पास करना थोड़ा ज्यादा वो हो जाता था, प्रायोरिटाइज हो जाता था. But when I used to study properly. Exams properly सब दिए, पास हुआ हूँ अच्छे मार्क्स से, तो वो किया है मैंने. How was the experience shooting for the series? Oh, it felt as if it was a vacation. मतलब हमने 3 महीने चंडीगढ़ में पीक समर में शूट किया, एकदम कड़ी धूप में. पर
unit इतना अच्छा था, cast इतनी अच्छी थी, सब so collaborative, so nice, so welcoming. तो मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, मस्ती मजाक में जोक्स क्रैक कर करके हम शूट कर रहे थे. हालांकि गर्मी बहुत थी तो सब उससे जूझ रहे थे, बट साथ में कर करके मजा भी बहुत आया. सो एंड चंडीगढ़ इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी है, तो हमने बहुत खाया है, बहुत घूमे, बहुत शॉपिंग करी है. सो बहुत मजा आया. At a very young age, you also got to work with A-listers like Aamir Khan and Ritvik Roshan. How was the experience working with them? Yeah, it's been amazing the experience. I mean, Aamir sir तो he's an institution in himself. आप उनको देख के ही मतलब when he's acting आप देख के इतनी सारी चीजें सीख लेते हो. But मतलब एक्टर तो पूरी दुनिया जानती हो कितने अच्छे, but I think after working with him I got to know कि यार he's a gem of a person. मतलब वो इतने बड़े स्टार हैं, उन्हें काफी चीजें करने की जरूरत नहीं है, but जब मैं भी उनसे पहली बार मिला, he made me so comfortable, he made me he gives everyone equal importance. He makes everyone feel so special, so I think that's really nice about him, and after working with him my respect has increased for him multifold. And I believe you haven't undergone a formal training in acting, and whatever you have learned is through your experience and working with these actors as well. That's absolutely right. I mean, I haven't gone undergone formal training. That's right, but I used to do plays in school. एनुअल डे पे जो ड्रामा होता था, नाटक होता था स्कूल में, वो मैं करता था. तो थोड़ा बहुत मतलब एक्टिंग के साथ एक्सपीरियंस था, बट ऑब्वियसली इतना नहीं था. सो बाकी जो भी सीखा हूँ मैं ऑब्वियसली काम करते करते, वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स. तो मैं हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीख के जाता हूँ, and I get inspired after every project. So I'm forever grateful for the work that I'm getting. Okay. And in an earlier interview, you had mentioned that OTT gives you an advantage. The web series gives you an advantage of more time for you to explore the character and dive deep into it. So is that the reason why you have done more of web series than films? That is not the reason. To be very honest, movies as such. So I'm a little choosy with my scripts. I love doing scripts that amuse me, that I really enjoy while reading. तो जो भी काम मुझे ऑफर होता है, उसमें मतलब बाय चांस आई थिंक ओटीटी का ज्यादा होता है, एंड उसमें मुझे चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. बट ऐसा कुछ नहीं है कि ओटीटी या मूवीज, आई वुड इक्वली लव टू डू मूवीज, बट पर ऐसा भी होता है ना कि यार कुछ काम आप भी करना चाहो तो बट डजंट वर्क आउट. तो ऐसा भी हुआ है कि मैं भी कुछ करना चाह रहा था, बट ऑब्वियसली सबकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो वर्कआउट नहीं हुआ. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मतलब मूवीज तो है ही यार, मतलब आई लव बड़े पर्दे पे देखना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. सो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ मूवीज अगेन. Okay. So what are the factors that you look into while choosing a project? It's quite simple with me actually. I love to read all my scripts, and I read it as like जैसे आप बुक पढ़ते हो या as an audience आप कोई पिक्चर देखते हो या कुछ पढ़ते हो, तो I read it like that. If I laugh when the script is supposed to make me laugh, or if I get emotional, or if I cry while reading it, I think that seals the deal for me. That's the most important. The script should move you if it's meant to. And हाँ, अगर if I enjoy reading a script, I do it. It's as simple as that. Then obviously later on things come, वो जो क्या character है, क्या चीजें हैं. But मेरे लिए priority is the story and the content that I'm going to be a part of. Okay. So of all the characters that you have played so far, Yeah. which has been your most favorite, and which character do you relate to the most? My most favorite would be Akash from Lakhon Mein Ek. Why? Because it came to me at a point that was my first web show, and तभी web shows का concept मतलब नया ही था बहुत, and जब वो आया था, so जो काम मैंने किया था उसके हिसाब से बहुत नया था, and it was quite challenging, and so I discovered a lot of things about myself as an actor, about myself as a person, about working with a proper professional cast and crew in the OTT space. So ये काफी सारी चीजें मुझे पता चली थी, and I really enjoyed playing that part. So Like that is what? I mean, when you say you found a lot about yourself, जैसे? काफी सारी चीजें यार, when I was playing the role of Akash for Lakhon Mein,
कितने इमोशंस होते हैं आपके अंदर जो when you perform you tap into them, and there are a lot of techniques that you develop, skills that you develop on the way, and like after, क्योंकि वो आप शो अगर आपने देखा होगा, it gets dark after a point, and तो वो थोड़ा intense हो गया था, and we were shooting non-stop, तो mentally also it was exhausting, so I knew where to draw the line, this can affect me, my personality. So, to draw that line between work and personal life, so a lot of things in life I generally learned, so which have helped me in my further projects. So, तो वो भी चीजें सीखी, but I think most relatable तो चलो ऐसे completely relatable कुछ नहीं, but I think Rajjo from Flings would be borderline relatable. Okay. Lakho Mein Ek was written by Viswa Kalyan Rath. So how did you find the script and how was it working with him? Yeah, so मुझे call आया था from Mr. Kavish Sinha, who's a casting director. He was casting for that project at that point of time, and I've always been a big fan of Viswa and his comedy. So जैसे You have attended his shows and all? I haven't actually. मुझे बोलते हैं हर बार, but I haven't. But I would love to, but कभी timing match नहीं हो पाती. But जब ये call आया था and Kavish told me कि Viswa has written the show, I was sold then and there कि Viswa ने किया है तो I want to be a part of it. But जैसे ही उसने Viswa बोला तो मुझे लगा कुछ comic show होगा, कुछ comedy based ही होगा, fun show होगा. But when I read the script, I was blown away. I was like, yeah, this is something that needs to be addressed and talked about, and it's a very important topic. And I'm glad I got to be a part of that show because काफी लोगों ने relate किया, काफी लोगों ने people, in fact मुझे messages आते थे, people opened up about their experiences, engineering experiences, and it really dealt with the toxicity of that space. So I think वही था हमारा main motive था कि लोगों को aware कराना है about what is the situation like in this field. So yeah. Okay. Since you have worked on in this field. So yeah. Okay. Since you have worked on a lot of OTT shows and there is this ongoing debate about OTT also being censored, what are your views on it? मतलब I don't know honestly. I feel एक freedom of speech तो होना चाहिए. Because OTT, I mean ऐसा नहीं है कि अब depends. जैसे some people exploit it, some people take good advantage of it. तो वो एक fine line है. पर अब वो होगा ही, अगर censorship नहीं है तो कोई exploit करेगा, कोई नहीं करेगा. But उस censorship आने से ये चीजें भी हो जाती हैं कि यार काफी चीजें जो आप एकदम real space में दिखा सकते हो वो नहीं कर सकते. जैसे अब अगर आप नॉर्मली कॉलेज में भी जाओ या कहीं भी जाओ तो लोग गाली तो देते ही हैं, so it makes the experience more authentic. But फिर आजकल ये भी ट्रेंड आ गया, जैसे मैंने थोड़े बहुत शोज देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यार गालियां फोर्स भी हैं कई जगहों पे, तो वो भी है. सो आई थिंक इट्स अ फाइन लाइन, बट आई थिंक थिंग्स आर डूइंग वेल. सेंसरशिप के बाद आई डोंट नो क्या होगा एग्जैक्टली, तो वो तो एक बार नहीं होना चाहिए, और it should be individual responsibility about the. I think individual responsibility is a better way to go forward. Okay. So, would you like to recommend any OTT shows and movies that you have watched recently to your fans? Any 4-5 shows, movies? Unfortunately, मैंने actually अभी recently कोई ऐसे proper बैठ के कोई show binge नहीं किया है. But I थोड़े टाइम पहले मैंने Succession नाम का एक show finish किया, which I really like. It's a very well made show. हिंदी show यार मैंने recently तो नहीं देखा, but एक show मैं binge करूँगा, वो है Campus Dairies. So I would recommend that कि wait for 7th January and watch Campus Dairies. And I'm genuinely saying this. मैं अपने college friends के साथ binge करने वाला हूँ because it's going to be a lot of fun. Okay. Thank you so much for connecting with us. It's been a pleasure speaking to you.